So, very good evening to everyone, and welcome to this batch of Excel 0 to Hero along with AI. So, today is the day one, and we are going to start with by looking at the curriculum for this batch, this course. It is going to be a 28 hours training, or you can say it will spread to 28 days, 4 weeks. And we are going to look at different modules. To start with, we will work with introduction to Excel, interface, basic navigation and data entry, then formatting cells and data, managing workbook and worksheet. So today I will be covering this module one, which is a general introduction to Excel and the various terminologies and various interface and how do you navigate into the data and how do we enter data and all these things. Then we will work on the data management and analysis, sorting the data, filtering the data using flash fill, autofill, subtotals, database functions, Excel tables. We'll understand all these concepts. Then we'll move to conditional formatting and charts, how you can segregate the data, how you can bifurcate the data and use conditional formatting and various charts. Then we will migrate to data analytics tool pack. So where we learn data validation, goal seek, performing what if analysis and other analysis. Then we will also talk about or learn how to protect the worksheet or workbook, how to share the workbook and use collaborative tools, how you can track changes and comments, and how you can work with co-authoring. The same Excel file is used by multiple persons, and how you can maintain that accuracy as well as responsibility of who is doing what in the Excel sheet. Then we will look at the advanced functions, which is very important, like logical functions, if and or. Then lookup functions, text functions, date and array functions. Okay, there are a lot of new functions which are there, which also will be covered in this course. The king of Excel, you can say pivot tables and Power Query. So we'll also look at how to create pivot tables, how to create pivot tables when you have data in multiple sheets, multiple worksheets, workbook, and so on. Then Power Query, I'll devote 3-4 days on Power Query and how to club the data, how to clean the data, how to transform the data. And then we will again look into advanced analysis, advanced problems of scenario manager, solver, goal seek, statistical function, regression, analysis, forecasting, all these things. And then we will spice it up with macros and automation, VBA, coding. And therein you will see the AI coming into picture because I will not teach you coding. Even I don't know coding. I use AI only to code, but yes, we will be able to create all the things with AI. Okay, integrate macros and automation to Excel. And then I will also help you with the shortcut keys and all these things and how to optimize performance and troubleshooting with the various issues. So this is a curriculum of what we are going to cover. Okay. Now, before I start with the day one thing I would like you all to check and confirm in the uh, chat box. Okay. Like what version of Excel you are using. Okay. So how do we check what version of Excel we are using? I will be sharing this link with you in the chat box to share, to download the material which we'll be using in the entire training. Okay, so just give me a minute. I've uploaded this and I'm sharing the link with you all. Okay, so you will be able to access all the material uh, using this link. Okay, and through this link you will be able to download all the worksheets. So you can share this, you can save this link in your notepad or any this thing. Okay. Now, uh, so how do we check what version of Excel we are using and why it is important to check that? So you'll go to the file menu. You will open Excel. You will go to the file menu. In the file menu, you will have an area of info. Okay, or maybe account. Yes. So in the account, when you go to the account, you will see your Microsoft and then your application version. So I'm using Microsoft 365 app for enterprise.
Okay. And if there is any update available, it will show you over here. Okay. So it is saying Microsoft 365 Office update. Updates for these products are available to download. Okay. So that you can do later on. But I want you to check this and tell me in the chat box how many of you are using 365, because I'm using the latest version of Excel. So if you are using the same version, you will be able to work with me in the same fashion. If you are using a previous version of Excel, like 2010, 13, 16, 19, maybe some of the functions or feature may not work with you. Okay. But I will give you. So Praveen is using 365. What about Shobit and others? Uh, if you are not using 365, then write which version of Excel you are using. Okay. Yeah, you can try to install, or I will tell you the another way of using it without actually installing is to work on 365, Office 365. So you need to have a OneDrive account, okay? And you can log into the OneDrive account and there you can use the online Excel. Okay, I hope you're able to see my entire screen, right? So you will be able to see my browser window and I'm opening OneDrive. So in the OneDrive, you will be able to use Excel. Okay, so you can do that. Okay, but for the initial sessions, you will not require that. But yes, if you can update to 365, nothing like it, because it is the latest and you should always use the latest technology. Okay, because other things will not work with the previous versions of Excel. So having said so, now let us start with the basics. Okay. No problem. So for today we don't require 365 actually, but when as we proceed we will require the use of 365. Okay, and I'll just show you what is the difference between not using 365 and using 365. Okay, there are a lot of updates Excel has done, and they are very much very good updates actually. Okay, so I am onto this file Excel training day one, C Alok Sethi. I have shared a link. You can download this file from that link. Today we don't require any data as such, but yes, I will teach you some customization and some terminologies that you need to know to work in the coming sessions. Okay, so I will just repeat everything in Hindi shortly so that those who are not comfortable that much in English they can understand. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग ये देखेंगे कि जो भी एप्लीकेशन है एक्सेल का, उसमें जो टैब्स हैं या जो भी आपको कमांड्स दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, है ना, टर्मिनोलॉजी। सो वी आर गोइंग टू लुक एट एक्सेल टर्मिनोलॉजी, which is very important and which is like ignored a lot in all the online sessions or online videos, but I always cover this because this is important. Okay. Now, if I will ask you some questions, and if you know the answer, you can write in the chat box or you can unmute and answer also. Okay. You can give it a try. No file is open. I did not understand what you want to say, Prasad sir. So I have shared a link. Okay. If you open that link, you will get this file, Excel create. Okay. Dashboard creation. I will add this file also, which I'm using. Link asking for permission. Okay. Okay. So I'm giving the permission to all. Okay, since it's a private link, so I will give the permission. But we don't want basically right now you're not required to use this file. So don't worry about the file. Okay, just open any blank file in Excel. I will give you the permission in the meantime. Okay, and tomorrow you will work on this file. Okay, so today we don't require any file right now. Okay, so don't worry about that. Now, Excel terminology. Okay, so what is this called? Where I have Excel training day one. What is this called? Anyone? Where you have the file name. If you open a new file, Control N, you will have a book one. Okay, so what is this called? This area, this section, what is this called? Anyone, if you know, can you write in the chat? What does this mean? What does it mean?
Title bar. Yes. File name or title. Yes. So this is called as a title bar. Okay. So this is called as a title bar, which generally has the file name. Great. Okay. So this is called as the title bar. Now, those who are using 365 in the title bar, you have file name, you have the location. So sometimes people wonder where the file is. So it will showing that the file is in the desktop right now. Then sensitivity. So general, all employees, anyone can use. If you wanted to make it confidential, you can use confidential, all employees and all. Highly confidential. Okay, so specific people. So you can set the criteria, or you can rename the file, or you can mention the category of the sensitivity the file info is having, information in the file is having. Okay, and we can put passwords also in the files that I will discuss later on. But we have this file title bar. This is the file name. Okay. Now, what is this called? This file, home, insert data. What is this section called? File, home, insert data, page layout, draw, formulas, review, developer, pivot. What is this called? This section. Menu bar. Okay. Anyone else? One option I've got is menu bar. Any other name to for this? This file is a menu, because when you click on file, you will get all these names. आपको ये सब दिखाई देगा. This is called as a file menu. But these are not menus. Home, insert, data. These are not menus. What are they called? Heading, functions. Ankit has given the right answer. Tab. Okay. So those who have attended my previous sessions or watched my videos, they will know the exact answers. Tab. These are called as tabs. See why I'm covering this today, because I'll be using these terms in the coming days. So you should be clear of what I'm saying. So right now, which tab are we on? अभी हम कौन से tab में हैं? Which is the active tab right now? Home tab. Home tab, correct. Home tab. Home tab. And now what? Now which tab? View. View. Okay. So how do we come to know, okay, which is the active tab? So the active tab will have a green underline, okay, below this. So suppose I click on automate, okay, you will see this tab, or I click on developer, you will see this. This is the active tab. So when I click on any tab, the icons below the tab changes. The icon below the tabs changes. Okay. So this is how we can see that the various icons are changing. Okay. So yeah, this is tab. Now what is this section called? I'll just highlight this. Okay. So what is this section called? So just a minute. So what is this section called? The one which I've highlighted with red mark. What is this area called? Anyone? We have the title bar, we have the file menu, and we have the tabs. And what do we have below the tabs? Functions. Okay. But what do we call them? Tools, options, heading, no. So this is the difference. You learn many things when you attend a session, okay, proper session. So these are not heading, these are not tools, these are not options, these are not functions. What is the exact name of this area where you have all these tools, functions, whatever you are saying, headings? What is the name of this? I have not got the correct answer yet. I'm waiting for the right answer. Anyone? Okay, let me type it over here.
Anyone who has now got a hint? Yes, now everyone is writing the right answer. Yes, this is ribbon. Okay. So this area where we have this set of commands or functions, this area is called as ribbon. Okay. This area is called as ribbon. Okay. Great. Okay. Now what's next? So as you change on, as you click on a different tab, the ribbon changes. And in the ribbon, you have different sections. Okay. You have different sections like this, like this. Okay. What are these sections called? So I'm just highlighting some of the sections. What are these called? These are called as groups. Okay. These are called as group. So this is a clipboard, this is a font, this is alignment, number, style, cells, editing, sensitivity. These are different groups which contains a lot of commands. Okay. And you will see this button also over here, arrow pointing down. When you click on this, it will pop up. This will come here. Okay. So alignment. This entire thing has come out of that box. Okay. Or that section has come out. So when you click on this, again, you will see the same section, but now the heading is font and not alignment. Okay. Now, when I click on this, here we don't have this arrow button. Here in the cell also, we don't have the arrow button. So wherever you have the arrow button, that portion will come out, extract numbers. Okay. So home tab has four arrows where you will see clipboard. So if you copy different things, suppose I say Control C, here also I do Control C, here also I do Control C. So I've done Control C 3 times. Okay, now I ask you a question. If I do Control V, what will get pasted? I did Control C 3 times. Okay, if I do Control V now, what will get pasted? The last copy. Okay, that means the menu tab, menu bar and tab will get copied, pasted. Okay, so let me try Control V. Okay, now, but I copied Excel terminology also. I copied title bar. Suppose I want to paste title bar. Is there any way I can paste title bar or it will not get pasted? What do you say? So that means when you press Control C and then you again press Control C on some other cell, then it get overridden. Okay, वो हट जाता है. Space special से कैसे होगा गुंजन? So suppose I press the right click and I go to paste special. Now how do I paste the previous copied content? नो नो सर, पेस्ट स्पेशल नहीं, ये जो एरो बार है ना, वहां पे आएगा। हाँ, करेक्ट. सो यस, सो नाउ दिस इज द यूज ऑफ दिस एरो बार. ठीक है, अब आप जब एरो बार पे जाएंगे तो जो भी आपने कॉपी किया है ना, ऑल द ऑप्शंस विल बी विजिबल. ओके, एंड नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन टाइटल बार, सो दिस इज गेटिंग पेस्टेड. सो इज दिस अ न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल? ठीक है, सो इफ दिस इज अ न्यू लर्निंग, द रूल इज यू हैव टू राइट न्यू इन द चैट बॉक्स, बिकॉज दिस इज अ न्यू लर्निंग दैट आई हैव गिवन टू द क्लास. ये मैंने पहली बार बताया है ये फंक्शन. ठीक है, टू दिस बैच. सो देयर इज समथिंग स्पेशल इन एवरी बैच. There are people who say that we have attended your previous batch and we want to attend the coming batch also. So I asked them, why do you want to do that? And they give me that simple answer कि sir वो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है हमें, है ना. तो this is something new which I have introduced in this batch. Okay. Yes. So Ankit was there in my previous batch. तो उन्होंने अगर न्यू लिख दिया that means yes. तो मैंने पहले पहले बैच में नहीं करा था ये. Okay. So I always try to do something new in the fresh batches. Yes. So Francis also attended my previous batches. So yes, new. तो ये नई चीज है. तो what we can do is suppose I copy different stuff और मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें पेस्ट करनी होती हैं. तो मैं कॉपी करके रख देता हूँ और जब जहां जो पेस्ट करना होगा, सपोज आई वांट टू पेस्ट द प्रीवियस थिंग हियर, I can go to the clipboard and I can select whatever I had copied and I can paste it at different places. Correct? So this is something new. Great. Chali. Nice. Okay. So this is how it is. Now, below the ribbon, you see some of the commands which are there with their names. What is this section called?
अभी हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, इस इनका क्या नाम है? I'll just remove the red lining so that you can focus on what I'm saying. So let me erase the drawings. Yes. So now tell me what is this section which I'm just highlighting is called? What is this called? Yes. Anyone? Someone from the PSIT group? Name of the group. Okay. Ha. Tell me, Anshika or Sandeep, what is this called? This section? You're already learning Excel in college, so I'm asking you. Do you know about this functions which you want to use frequently? Yes, you are right, Gunjan, you are right. But what is this called? The problem is we know the things, but we don't know the name of the things. So when we have to explain, we don't know what exactly to say. And this is the gap which I want to fill. So what is this called? Anyone? Yes, so Prasad sir has given the right answer. It is called as quick access toolbar. The full name is quick access toolbar because from this toolbar you can quickly access any command that you want. Now many people will not have this. Anyone in the group which doesn't have this quick access toolbar active in the Excel? कोई ऐसा है जिसके पास ये टूलबार है ही नहीं, जिसके यस सर। एक्सेल टूलबार नहीं है? कौन है? सर पहले तो टूल बार या क्विक एक्सेस बार ऊपर आता था ना टॉप पे। हाँ। अब नीचे मेरे तो नहीं आ रहा। ऊपर कहाँ, यहाँ इसके रिबन के ऊपर? नहीं, नेम एक्सेल ट्रेनिंग के बाद जैसे कॉपी पेस्ट का अच्छा, ऑप्शन यहाँ आता। पर ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ। चलिए, तो आपके आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी? नहीं आ रहा सर अभी। नहीं आ रहा। मेरे भी नहीं आ अंशिका रहा है। भी कह रही है नहीं आ रहा, और किसके नहीं आ रहा है? मेरे भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके भी नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, लेट अस लुक एट दिस। तो लेट अस कीप ऑन होल्ड, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू एक्टिवेट दिस और मेक इट विजिबल। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज दिस कॉल्ड? C6 जहां पर है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस एरिया? क्विकली, जहां पे एड्रेस। C6 लिखा है वो क्या कहलाता है? एड्रेस? सेल एड्रेस। Cell, okay. Cell reference. Yes. Shreyansh has given the right answer. Shreyas. Name box. नेम Okay, this बॉक्स। is called as a name box. And the beauty about Excel is that when you hover over the particular area, it will give you the hint also. So you can see the name box written over here. Okay. It actually tells you the cell address. Okay. So this is the name box, but it tells you the cell address. Now, what is the use of this name box? बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इसको यूज कैसे करना है ना. Many people don't know how to use this name box. I'll give you the idea about how to use this. Now, suppose I have selected these cells. Okay, so when you start selecting any cell, what the name box is telling you now? 4R into 1C, what does it mean? 4R into 1C, what does it mean? 4 रो इन वन कॉल कॉलम। वन कॉलम। Correct, correct. 4 row and 1 column. These are 4 rows. Row number 2, 3, 4, 5. And there is 1 column, column number B. Correct? If I select the entire this area, it is saying 4R into 4C. That means 4 row and 4 column. So B, C, D, E, 4 columns, and 2, 3, 4, 5, 4 rows. Okay. Now, suppose this I want to give it a name. मैं ये जो 4 रो में हमने जो लिखा है, उसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ. आई वांट टू गिव अ नेम टू दिस. ओके, सो let me call these as terms. Okay, so I have given the name to this selection of 4 rows and 1 column, terms. Okay, now what I do is I just press equals to and I write terms.
and press enter. What do you see? What has happened? I'm able to copy paste the entire content from that 4 rows. अगर मैं एक नई शीट ओपन करता हूं और यहां जाके ये रिबन को भी जरूरत नहीं है, भी हम इसको भी क्लियर कर देते हैं. Just give me one. Yeah, now this is a blank sheet, right? We don't have anything in this sheet. What I will do is I will just write is equal to terms and press enter. What do you see? You see all these terms getting written over here. Now, how it happened? Why it happened? ये ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्या किया हमने कि ये नाम यहाँ पे अपने आप आ गए? सर एक्सेल ने अपने आप एक फॉर्मूला बना लिया जिसमें टर्म्स का मतलब ये 4 लाइन आइटम है जो कि अपन ने पहले दिए थे। एग्जैक्टली exactly, हाँ. तो ये दिस इज कॉल्ड एज नेमिंग अ रेंज. इसका जो लिटरल मीनिंग लॉजिक है वो है नेमिंग अ रेंज. सो वी हैड व्हाट इज अ रेंज? रेंज इज द सिलेक्शन ऑफ सेल्स. तो मैंने ये कॉपी किया मान लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया. ओके, नाउ this is not showing me 4 different rows. It is showing me a selection of 4 rows and it is showing, अगर आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे is equal to terms दिखा रहा है. That means this are not written, but these are coming from some reference where I mentioned them as terms. Okay. और अगर आप इन चारों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर what it is showing C2 hash. Now it is important to understand this. What do you mean by C2 hash? Why we are getting this? Because earlier when I was selecting this here, so I was getting this 4R into 1C. Or if I select this, I will still get 4R into 1C. But here it is telling me B8 hash. So what is this B8 hash ka matlab? Anyone? This is something new that you are going to learn today, and which is very important. So अभी मैं लिखता हूँ C2 hash. See what has happened. C2 hash किया मैंने. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ C2 लिखता हूँ C2, what will happen? It will copy the content from C2 and it will give it to here. Give it the here. Okay, यहाँ पे आ गया C2. जब मैंने C2 hash लिखा तो उसने क्या किया? Autofill from C2. Yes, it will autofill from C2, but only one row content, right? But if I put C2 hash, what is happening? Can you understand? Can you like focus on this and see the difference when I put the hash? Now, can anyone tell me what do you see? What do you notice here? What is happening because of this hash? सर C2 के साथ जो भी वैल्यूज है सारी वो एक साथ आ गई। मतलब हाँ, जो C2 की टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी एक साथ आ गई। हाँ, वो क्यों आ गई? और वो C5 तक ही क्यों आई है? C6 C7 क्यों नहीं आया उसके अंदर? बिकॉज while defining the terminology I selected 4 cells only. Now let me do something. मैं कुछ चेंज करता हूँ यहाँ पर. ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम बॉक्स. आई एडेड वन मोर टू द टर्मिनोलॉजी नेम बॉक्स. नाउ आई वांट टू डिफाइन रीडिफाइन द टर्म्स. जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखा था इसको मैं ये इसमें ये नेम बॉक्स भी इंक्लूड करना चाहता हूँ. ठीक है, सो हाउ कैन आई डू दैट? नाउ इफ आई सी टर्म्स एंड आई प्रेस एंटर. ठीक है, नाउ द टर्म्स ओनली मीन दीज 4. आई वांट टू इंक्लूड दिस आल्सो इन द टर्म. Okay, now how do I do that? Okay, now tell me, let me tell you. So we will go to the formula tab. We'll go to the formula tab. In the formula tab you will get this name manager. Okay, let me highlight this. Now many people don't know this and this is very important. मतलब इस training में you will get to learn all those things which are not very common, which you might have used Excel from years but you will not know these things. Okay, that is the USP of coming here. Okay, now this section I'm talking about, this section name manager. Okay, I am in the formula tab in the name manager. Now when you click on name manager you will see the terms. Do you see this window? Terms. Okay, and what it is representing? It is representing
B2 to B5, B2 to B5, B2, 3, 4, 5. But it is not covering B6. It is not covering B6. I want to add B6 also. So now what I'll do, I'll say edit. I'm editing this. Okay. I'm editing this, and now we will select B6 also in the terminology. Okay. So now it has opened this editor, and now instead of B6, B5, I will write B6 over here. I'll delete 5 and I'll write 6, and I'll say OK. Now this is updated. The memory of the terms is updated to include the name box as well. Okay, you can see this. If you see the values, it will have the name box as well. Name box as well. If you see what it refers to B2 to B6. Okay, now let me close this. Now, as I close this, you see the name box also coming over here. Earlier, it was not there. आपने ध्यान दिया था earlier name box नहीं लिखा था यहाँ पर. Are you getting it? Now, if I type terms here, if I type terms over here, I will get all the 5 values: Excel terminology, title bar, menu bar, quick access, and name box. And if I type is equal to L2 hash, I will get it repeated. So what is hash doing? Hash is actually representing the array which is followed by L2. L2 के बाद जितने भी नाम हैं वो सारा एक रेंज पूरा L2 hash represent कर रहा है. ठीक है. Now how does it make a difference, sir? तो मैं एक काम करता हूँ. Now let me write some numbers over here. ठीक है. और let me write some number over here: 100, 200, 300, 400, and 500. And let me first name the 4 numbers. Okay. Let's say these are the score of any batsman. Okay. Scores. Scores. Okay. So I select these 4 numbers and I write scores over here and enter. So now they have become scores. They have become scores. Now if I type is equal to scores, I will get these 4. Okay. I will get these 4. Okay. Now suppose I want to get the total of their scores. Due to it selected other values. Yes. So now suppose I write is equals to F8. Now what it will give me, tell me in the chat box. When I likha is equal to F8, what will come over here in this cell H2? What will come in the cell H2? 100. 100. Perfect. But if I type F8 hash, what will come? 100, 200, 300, 400. From 100 to 400. 100. Okay. Now if I say sum F8 hash, now what will come? The total of. The 4 numbers, Yes, sir. right? Let Yes, us sir. let us see. We are getting 1000. Yes, correct है. करेक्ट है ना? 1000 इसका टोटल हाँ. है ना? तो कभी आपने ऐसा देखा कि सम करना है बिना रेंज को सेलेक्ट करे सम आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है. हाँ. या तो आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी या आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, है ना? बट यहां पर मैंने क्या किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, आई जस्ट गिव इट अ नेम, और उस नेम के बाद मैंने इसको सम लगाया और वो सेल नंबर विद द हैशटैग लिख दिया है यहाँ पर. तो ये क्या कर रहा है, पूरा रेंज को सिलेक्ट कर. नाउ इफ आई चेंज एनी नंबर ओवर हियर, विल द आंसर चेंज? सपोज आई मेक इट फ्रॉम 100 to let's say 600, will the answer change 1000? Yes, sir. Yes, it Yes. will definitely change because this number 100, oh, I made 600, it has become 600 over here also, it has become here also. Okay, so this is what this happens. Okay, this is what happens. Okay, just give me 1 minute.
Okay, so have you understood the concept which I wanted to make it clear कि आप whenever you define any range, ठीक है, ये रेंज हमने डिसाइड किया, डिफाइन करा, तो इसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका है कि यू कैन सेलेक्ट द रेंज एंड गिव अ नेम ओवर इन द नेम बॉक्स, ठीक है। नाउ सपोज यू वांट टू चेंज इट, मैं इसको रिवाइज करना चाहता, तो मैंने आपको फॉर्मूला टैब में मैनेजर नेम मैनेजर में जाके एडिट करना सिखाया था। अभी सपोज आई सेलेक्ट दिस and what I do is I write the name scores again. So will it override? The answer is no, क्योंकि हमने पहले ही से ही स्कोर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अब जो स्कोर डिफाइन कर रखा है उसको अगर चेंज करना है, तो अगेन यू हैव टू गो टू द नेम मैनेजर एंड क्लिक ऑन दिस स्कोर्स। दिस विल ओपन दिस विंडो वेयर यू कैन एडिट द नेम एंड हियर यू हैव टू मैन्युअली डू द करेक्शन और यू कैन सेलेक्ट द रेंज। मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक के सारे एसी को पूरे को स्कोर बोलना है। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन ओके, नाउ दिस विल बी द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द स्कोर। Okay, now I have applied some formula over here. So it will not include this. But suppose I type some number over here. Okay, 1000, 2000, 4000, 5000. Okay. And now I want this entire range to be called scores. Okay. Now, why I got a reference error over here? Can anyone tell me? Why we got a reference error over here? Because we have, sir, you have removed that terminology. No, Yes. that I have removed the terminology. And secondly, now F8 hash doesn't mean anything. Because F8 may I had given the terminology reference is equal to F8 here. But I have removed that and I have written 1000. Now here what I had written is some F8 hash. Now F8 hash doesn't mean anything. उसका कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए ये रेफरेंस एरर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ F8 करता हूँ तो 1000 ही आ जाएगा, विच इज दिस नंबर। इफ आई गेट F8 to F12 it will add all these numbers and I will get, but if I type F8 hash it will not mean anything, इसलिए रेफरेंस एरर आ रहा है, ठीक है। now what I was saying is I want to give a name, I want to redefine this, तो आप नेम मैनेजर पे जाएंगे, स्कोर पे डबल क्लिक करेंगे एंड यू हैव ऑलरेडी डन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, सो दिस इज द अपडेटेड स्कोर्स। नाउ व्हाट आई डू इज आई वांट टू टेक द टोटल ऑफ दिस स्कोर, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली से इज इक्वल टू सम एंड यू विल जस्ट राइट स्कोर्स, दैट्स इट। अब देखो जैसे ही मैंने स्कोर्स लिखा इट इज कमिंग इन ब्लू कलर एंड द एंटायर रेंज इज गेटिंग सेलेक्टेड। तो मेरा काम कितना आसान हो गया, अब मुझे रेंज को नहीं सेलेक्ट करना है मैन्युअली, आई कैन जस्ट टाइप इट एंड आई विल गेट द रिजल्ट। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द एडवांस version of Excel or advanced feature in Excel. Okay, and that's it. Okay, so this is what I सर wanted to show. Now suppose if you say F2 hash, so will it mean anything? F2 hash, it will not mean anything. Why? Because F2 hash doesn't have any series. Okay, but if I type is equals to scores over here, तो ये सीरीज आ गया, ये आ गया आपका H4 में। नाउ इफ आई टाइप इज इक्वल टू सम H4 hash, it will mean this. So do you understand why this is equal to F2 hash was not having any meaning, but this is equals to H4 hash is having a meaning? Because here I'm using an array. This scores is representing an array. ये पूरा array कहला रहा है, ठीक है। अभी मैं इस रेंज में से किसी को डिलीट करना चाहूँ, एनी नंबर को, आई एम नॉट एबल टू डिलीट एनी नंबर। if I do any changes, suppose I have 400 को I want to make it 300. If I type 300 I will get a spill error because this is a reference. This is a array function. Is it clear to everyone? सर हैश का मतलब वहीं पे यूज आएगा जहाँ पे कि नेमिंग दे रखी हो किसी चीज रेफरेंस की। हाँ, करेक्ट, जहां पे आपने नेमिंग दे रखी है ना वहीं पे हैश यूज आएगा उसका रेफरेंस देने के लिए। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर स्कोर्स कॉल किया तो स्कोर्स मींस दिस,
नाउ स्कोर जहां से स्टार्ट हो रहा है H2 से हैश मैंने दे दिया, इसका मतलब ये रेंज जहां खत्म हो रही है वहां तक का एरिया सेलेक्ट कर लो। तो ये सेलेक्ट कर लिया उसने। दिस सिंपली मीन्स दैट, ओके। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज नेम बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला बार। ये जो है ये फॉर्मूला बार कहलाता है, ठीक है। सो जनरली वी राइट द फॉर्मूला ओवर हियर, और व्हाटएवर वी राइट वी विल सी ओवर हियर, बट देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज fx। इस fx को आप क्लिक करेंगे ना तो इट विल ओपन अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट where you can see what has happened. So we have used a sum function which is number one. There is no number two because in the number one we had use a range. तो इसलिए ये number answer यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। Secondly, one more thing I'll tell you which might be new for you all. Whenever you select any formula, okay, shift दबा के आप जब फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे, you will see the answer on top of the formula, ठीक है। Have you ever noticed this? ये देखिए 14700 छोटा सा मुझे एक स्क्वायर में दिख रहा है, correct? So if you write any formula and if you select this formula, you will get the answer here also without putting the enter. नो सर। Suppose I write the function average, not here. I write the function average over here and I want to take the average of scores. तो ये 1470 एवरेज आ गया इसका, ठीक है, 14700. So can we also first select all the row including blank so that we can add any blank item? Yes, yes, definitely we can do that. I'll tell you what you are saying is right. सर ये So 1470 का लिखा हुआ आया, नहीं आया था अभी लिखा हुआ। कहाँ नहीं आया था? आपने लिखा एवरेज का फंक्शन, तो आपने कहा था ना बिना एंटर करे 1470 आ जाएगा। हाँ आएगा ना, वो सेलेक्ट करने पे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, इसको हाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वेन यू सेलेक्ट द फॉर्मूला विद द नोटेशन इट विल गिव यू द आंसर ऑन टॉप ऑफ इट, जब आप सेलेक्ट करेंगे उसको तभी, ऐसे नहीं। ठीक, ठीक है नाउ सर। श्रेयाश हैज पुट अ वेरी गुड थिंग, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि ये लिस्ट तो बढ़ सकती है आगे, है ना। तो सपोज आई वांट टू गिव अ नेम टू दिस रेंज, जैसे स्कोर्स है, तो आई हैव रिटन सम पीपल नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर, और ABCD मैंने लिखा, ठीक है, आई ड्रैग इट डाउन। तो इन प्लेयर का स्कोर मेरे पास अवेलेबल है टिल A to S, ठीक है, लेकिन इन लोगों का नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं जब भी मैं स्कोर अपडेट करूं तो यहाँ पर टोटल आ जाए, ठीक है। सो कैन आई क्रिएट अ लिस्ट विद ऑल द ब्लैंक्स ऑल्सो? तो यस, डेफिनेटली यू कैन। तो ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ आई गो टू नेम मैनेजर एंड आई विल अपडेट दिस रेंज टू इंक्लूड टिल F19 or 20. So I'll say F20 and say OK. So this is updated. Now when I write is equal to score is equal to sum and then scores, so it will select all this and I will get the answer. ठीक है, 14700 ही आ रहा है। अब सपोज आई एड मोर स्कोर्स, मैं यहाँ पे 2500 लिखता हूँ, दिस विल इवेंचुअली चेंज, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। Alok sir, why the zero has been come in another line? मतलब ये जीरो क्यों आए हैं? यहाँ पर ना, हाँ। करेक्ट। नाउ सी दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जीरो क्यों आ गए? बिकॉज दीज आर ब्लैंक सेल्स। तो हम जब किसी की इमेज क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा, इज इक्वल टू स्कोर्स लिया, तो जब भी आप स्कोर को टाइप करवाओगे तो जो सेल ब्लैंक होगा वहां पे वो जीरो दिखाएगा। सो सपोज आई राइट स्कोर्स एंड एंटर, तो जो भी मेरे सेल ब्लैंक है, जो भी ब्लैंक सेल है उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो ले लेगा। सर अगर हम कोई फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ऐसे करके जिसमें हम एजे स्कोर पूरा करते हैं एंड एक दूसरी एक्सेल फाइल है इन अनदर टैब वी हैव हाँ। क्रिएटेड फॉर्मूला फॉर यूजिंग दिस सम फंक्शन, ठीक है। हम्म। एंड आई डोंट वांट कि वहाँ पे वो जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो जीरो शो हो, तो उसके लिए कुछ है? मतलब इट्स नॉट लुक गुड अगर जीरो वहाँ पे शो होता है तो वो एक अलग से बड़ा अजीब सा लगेगा। करेक्ट। बट देखो क्या है ना कि इफ यू आर गिविंग एनी रेंज जहाँ पे ब्लैंक है, तो व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ कॉपी इट विल नॉट हैव ब्लैंक सेल्स, इट विल बाय डिफॉल्ट पुट जीरो ओनली। और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट पुट एनीथिंग। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, let me try this. I'm not very sure whether this will give the answer or not, but let me try.
देखो, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज इज ब्लैंक, है ना। इज ब्लैंक का मतलब कि आपका कोई भी सेल ब्लैंक है क्या। तो यहाँ पर जहाँ पे फॉल्स बता रहा है, दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज आर देयर। तो यहाँ तक वैल्यूज थी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑन दीज वैल्यूज देर इज अ ब्लैंक विच इज कमिंग, तो यहाँ पे ट्रू बता दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई फंक्शन ओवर हियर कि वहां जहां पर भी वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है तो आई वांट टू रिप्लेस इट विथ निल। ओके, निल वैल्यू, ऐसा हम कुछ फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग इफ इट वर्क्स, लेट मी सी। इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू, देन वी वांट दिस वैल्यू, else whatever is the value we want that only, so we will just put this only, ठीक है। नाउ, तो प्रवीण, यू गॉट द आंसर नाउ। अब देखो ये ब्लैंक हट गया, जीरो हट गया, राइट सर। है ना, बट वी गॉट फॉल्स। हाँ, वो वैल्यू थी, वो वो वैल्यू फॉल्स। भी चले गई, वो वैल्यू की जगह फॉल्स आ गया, ठीक है। सो आई वांट द एग्जैक्ट वैल्यू ओवर हियर, सो आई विल से स्कोर्स। हाँ, हाँ, ये दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग सर। राइट, है ना। तो देखो यही मैं बोल रहा था कि दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। कई बार कोई ऐसे पार्टिसिपेंट भी होते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, तो यू हैव टू योर ब्रेन शुड वर्क। नाउ आई वाज नोइंग ऑल दीज फंक्शंस, इसलिए मैं सोच सका और इसको अप्लाई कर सका, एंड इट वर्कड आल्सो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डाउनलोड टू यू आल्सो, टू एवरीवन, कि जब आप सीख रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई द फंक्शंस। ये बहुत सारे लोगों को जिनको लगता है कि हमें एक्सेल आता है और हमने बहुत सारे एक्सेल के कोर्सेज कर रखे हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, और सर्टिफिकेट इकट्ठा कर लेते हैं, इट इज ऑफ नो यूज, आई टेल यू, है ना। कभी भी कोई भी कॉर्पोरेट में आपको इसलिए जॉब नहीं मिलती कि आपके पास एक्सेल का सर्टिफिकेट है, लेकिन जॉब मिलने के बाद अगर आप एक्सेल में ये सब कर पाते हो तो आपको, यू विल गेट बेटर रेटिंग और यू विल गेट अ गुड रिव्यू, और हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिल जाए इससे, है ना। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स रादर देन कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स। नहीं तो यूडेमी पे देर आर मेनी कोर्सेज यू कैन बाय एट 499, एंड वहां से आपको जस्ट स्क्रॉल करना पड़ेगा और यू विल गेट द सर्टिफिकेट एट द एंड, है ना। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, नॉट व्हाट यू आर लर्निंग। ओके, सो यहाँ पे आई विल जस्ट एक्सप्लेन, दो ऑल्दो इट इज वेरी एडवांस लेवल फॉर द बिगिनर्स, बट आई विल एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम कि व्हाट वी हैव डन। सो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि व्हेन आई टाइप स्कोर्स, सो इट विल गिव ऑल दीज नंबर्स, बट वेर एवर देर इज अ जीरो, वेर एवर देर इज अ ब्लैंक, ये सारे सेल ब्लैंक हैं। सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड देखिए, बेसिक एक्सेल तो हर कोई पढ़ लेता, पढ़ा देता है, लेकिन जब ये थोड़ा सा ट्रिकी चीजें आती है ना, ये आपको समझ में आ गई, दैट मीन्स आई हैव डन माई जॉब एंड यू हैव ऑल्सो, यू विल बी सेटिस्फाइड दैट यू हैव ज्वाइंड द राइट कोर्स। ओके, नाउ दीज आर ब्लैंक्स। Now this should also have come blank, but यहाँ पे जीरो आया है। Let me paste it over here only. करेक्ट, तो देखो यहाँ पर ये सब जीरो आना चाहिए था, ब्लैंक आना चाहिए था, बट यहाँ पे जीरो आ गया। What I want is I want to get a blank instead of zero, ठीक है। So what I have done here is I have said, I have asked कि if the scores is giving me blank, then instead of blank I want to have a blank cell. So this is blank cell, inverted commas without anything means blank, else I want the score, else I want the score का मतलब क्या है, ये जो स्कोर के अंदर वैल्यू है वो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हाउ आई डिड दैट, सो ये जो स्कोर है, you will check whether it is a blank or not. Now how to check, there is a function called as is blank. Okay, so there is a function called as is blank. So when you write this function is blank, it will check whether there are blank values or not. So I'm just showing you this much. So it is giving me false, 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 true, true, true. So that means there are blank values, correct? So it is saying if is blank. Now, if this is blank, then what we want? We want a blank instead of zero. Okay, but it will not work like this because this is not a function. This function ends over here only. यहाँ इसका काम खत्म हो गया इस ब्लैंक का, लेकिन हमें फॉल्स और ट्रू नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए, राइट। तो वो करने के लिए वी विल हैव टू ऐड अ नेस्टेड फंक्शन, एक और फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, वो है इफ फंक्शन।
So we'll write if. So this becomes my logical test of the if function. So if function says logical test, this is the logical test. Now this test means that if the result of this test is true, that means it is giving me false value. It is giving me blank values. तो इस रिजल्ट इस टेस्ट का रिजल्ट अगर ट्रू है तो रिटर्न मी ब्लैंक. अगर रिजल्ट ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो रिटर्न मी व्हाट देयर इन द लिस्ट स्कोर्स. And now we got the result, desired result. Understood, everyone? Okay, so you might watch this part of the video again to understand, to have a better understanding of this. But yes, this is what I wanted to show. Okay, so this is the terminology. Now I will come to this how to access the quick access toolbar. Okay, beyond this you have rows and columns. These are columns A to Z. Okay, these are columns. Vertical columns are vertical, rows are horizontal. Now how many rows are there in Excel and how many columns are there in Excel? This also I ask in all the batches. So anyone who is knowing the number of rows and number of columns. So if you want to go to the last row, what you can do is you can press Control and down arrow. You will reach to the last row. So you can see the number from here, 10,48,576. So 10 million rows are there. 10,48,576. There are 10 million rows. Okay. So this is the last row, 10,48,576. So 10,48,576. Now, if I want to see the number of columns, so what I'll do, I'll press Control and right arrow. Control and right arrow. Now, Control and right arrow will tell me that the last column is XFD. The last column is XFD, but it is not showing me the number. तो XFD का नंबर क्या होता है, कैसे पता चलेगा? So what we will do is we will write a function over here, column, and you get to see the number 16,384. So there are 16,384 columns, 16,384 columns, and 10,40,576 rows. And if someone asks you how many cells, then what we will do, we will multiply these two numbers. So these are the number of cells. Okay, if you want to convert this into million, 10 raised to the power 6. So 1.04 cells and same formula we'll copy over here. 17,179 million cells are there in Excel. Okay. Yeah. So 1 million rows and 17,179 million cells. Okay. Now, this is called as the sheets, like sheet tabs. Okay. You can change the color also, tab color, and you can select any color. Suppose you want to represent them by different colors, you can change the color of the sheets. Okay. Tab color and select any other color like that. Okay. And this is called as a navigation. This is called as a status bar. So it is showing ready mode, number of sheets, and worksheet statistics. If you click on this, you will see how many cells are there, cells with data, blank cells, tables, formulas, and all. You will get to know. And here you have different views like normal view, page layout. This is print preview, and this is the zoom bar. So you'll be able to zoom in and zoom out of the page. Okay. Right. So we were on sheet number 4 working here. Okay. So these are the different terminologies. So today we have covered basics of Excel and terminologies. Okay. This is how I'm going to proceed every day. This is how the sessions will happen every day, 7:30 to 8:30. We might extend by 5-10 minutes depending on the topic. So 8:45 तक चला जाएगा. I will not extend beyond. Okay, it is dinner time for everyone and you might have other occupations also. So we'll stop here for the day.
Okay, if you have any questions, any doubt, you can ask now, or you can put it in the chat, or you can ask me privately also on my WhatsApp. Ping me over there. Okay, so I will see you tomorrow. And now, if you have any questions, I am here to answer them. वो नहीं बताया हाउ टू एक्टिवेट दैट स्टेटस बार ना। अच्छा, हाँ, वो मैं भूल गया था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाँ, हाउ टू एक्टिवेट दैट स्टेटस बार देख लेते हैं। सो यू विल गो टू द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में। यू विल गो टू ऑप्शंस। इन द ऑप्शंस यू विल हैव दिस ऑप्शन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अब जिनको नहीं दिख रहा था उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अनचेक है। ठीक है, मैंने अपने आप यहाँ पे भी अनचेक कर दिया। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। अभी देखो मेरी एक्सेल में से भी टूल बार गायब हो गया। ठीक है। एंड गुंजन सेड दैट सर ये तो ऊपर आया करता था। ठीक है, तो गुंजन मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर कैसे आएगा। ठीक है, तो अगेन वी विल गो टू द क्विक एक्सेस टूल बार एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन शो क्विक एक्सेस टूल बार एंड हियर you can add any number of tools that you want to add. Suppose I want to add this name manager. ठीक है, तो name manager मैंने यहाँ select करा and I click on this add. So it is already there. Okay, so let's say macros and I say add. It is already there. तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी होंगी, है ना। दिस इज पॉपुलर कमांड। पॉपुलर कमांड तो होती हैं। सो व्हाट यू डू इज यू से स्विच टू ऑल कमांड्स। instead of popular command you switch to all commands. Select all commands from here. So now you will see all the commands which are there. Okay, now this 3D color is not there. Suppose I want to add this. Now this is added. This is added. Okay, now here toolbar position. So it will ask you where you want to show the toolbar, below ribbon or above ribbon. Suppose I say above ribbon. Now I click on OK. You will see the toolbar on the head above ribbon. दिख रहा है आपको? और यहाँ पे जो मैंने 3D कलर ऐड किया था वो भी दिख जाएगा मुझे। 3D कलर। So if there are multiple tools, you will get to see over here. Okay, like this. So speech bubble. There are a lot of things you can insert speech bubble also. Okay, or you know that Excel can speak also. So I have this speak cells. So Excel terminology. Title bar file name. Menu bar / tabs. Quick access toolbar. Name box. okay, so you can add, there is one very good tool which is screen clipping. So when you click on this, okay, it will take the snapshot of the screen, okay, and you will get the snapshot. तो आप बहुत सारे टूल्स एक्सेल के यूज कर सकते हैं एंड वी विल एक्सप्लोर मेनी अदर टूल्स। ओके, सो आई सपोज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो ये स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, हाँ, जनरली स्क्रीनशॉट में क्या होता है, व्हेन यू डू एनी चेंजेस हियर इट विल गेट देयर आल्सो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो टर्म्स लिख रखे थे उसमें अगर कुछ चेंज करेंगे, एक्सेल टर्म्स लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। In the screenshot also you will get this Excel terms instead of terminology. So these are some tools which we will explore tomorrow, and I will introduce some AI feature also. Today was the first day, but we will cover not many things. Okay, so you can do a lot of customization into Excel by going to the options and explore this customize ribbon also. यहाँ पर भी आप बहुत सारा customization कर सकते हैं, quick access toolbar में भी कर सकते हैं, and so on. Okay. Now, any other questions, anyone? नो सर। Okay, great. So, good evening to all and enjoy your evening. And I hope you like the session. And if you have any friends or colleagues whom you think would benefit by joining this and have not joined this, okay, you can recommend this course to all. Okay, I don't promote it like very insanely like Jatin Shah or any other person जिसका ad आपको हर जगह मिल जाता है. I don't give ads on my for my courses.
But yes, you can help me get more people to benefit from this. Okay. Thank you, Prasad sir, and thank you everyone. Okay. The objective is to spread whatever knowledge I have, little knowledge I have about Excel to you all. Okay. And see you tomorrow again at 7:30. Okay. So we will start sharp at 7:30 and we will conclude at 8:30 or 8:45 maximum. Today was the first day, so I had extended the session. But from tomorrow, we will stick to the timelines. And if you have any problem or any questions, any doubts, you can put it in the group. I will share this file in the group so that you can recall. Okay. So yes, thank you, everyone, and see you tomorrow. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.